सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं जिस मार्केट में थी, एक तो चलो मैं छोटी भी थी, बट जो हमारा छोटा है वो बाहर के हिसाब से छोटा नहीं है। चलो अगर मैंने 16 साल की उम्र में अपना या 15 साल की उम्र में अपना स्टार्ट किया है, तो मैं मार्केट में जाके अपना कैश ऑन डिलीवरी वाला अकाउंट नहीं खुलवा सकती। और मतलब 18 साल की उम्र में वो बच्चे वहाँ पे कहना शुरू हो जाते हैं हम तो जा रहे हैं। हमारे 18 साल की उम्र में भाई रात को 10 बजे तक बाहर नहीं रुकने देते हमें। मेरा जब स्टार्टअप चल ही रहा था, मेरी जॉब भी चल रही थी, बस 4-5 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि आई कुड क्लियरली सी देयर लाइक अंडर पेइंग मी। एक वीडियो थी जिसमें मैं आई टॉक्ड अबाउट 5 डिफरेंट scholarships फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बट यू स्टिल हैव टू वर्क विद द राइट पीपल बिकॉज इफ यू गेट स्टक देन देयर इज नो वे बैक. Assalamualaikum guys, welcome to another episode of the True Essence podcast. Today हमारे साथ हैं Sanya Shoaib. Sanya Shoaib is the founder of Markifyre, which is a social media marketing agency. She is also a digital creator. Assalamualaikum Sanya, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you. अच्छा Sanya, हमें अपने बारे में कुछ बताएं. My name is Sanya and I'm an influencer. I still don't like calling myself that, but that is what I am. And I'm also an agency owner. It's a digital marketing agency that you just talked about. So Yeah. I'm basically just repeating after you. But anyway, and I recently graduated from my master's from Hungary. And I'm also a freelancer. I'm a freelancer, and I market. I'm in marketing, and yeah, that's about it. अच्छा, Sanya talks like Sanya का जो expertise है ना, it's basically scholarships for Pakistani students abroad. So she basically guides Pakistani youth to actually go out abroad and study in different bachelors, masters, different programs. अच्छा Sanya, let's talk from the beginning. Let's talk about your first O-level experience in Pakistan. I think पाकिस्तान में आपने सिर्फ O-levels ही किया है ना? नहीं, O-levels and A-levels. ठीक है, आपने O-levels पाकिस्तान से किया, then you went out, you did bachelors and masters. चलें, let's talk about your O-levels वाली journey. So in my O-levels and A-levels, I was in Beacon House, which is a good school here, but even then, like, I feel like जो teachers वगैरह हैं, मतलब obviously when I go out in the open, the degree that I hold is a good degree, but when it comes to the teachers and जो वहाँ पे जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जिनके हाथों में हम थे, they were, I mean, some of them were good, but like कुछ ऐसे थे जिनको अब पता चलता है कि अच्छा पैसे दे रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब which is okay, मतलब ठीक है, हम सबको पैसे मिलते हैं तो हम सिखाते हैं, but like there were some teachers in my childhood which would literally मतलब I think I mentioned it outside that I was a very average student. तो मतलब and I think majority आपकी क्लास में लोग average students ही होते हैं. तो अगर सारे teachers अपने top वाले बच्चों के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे तो जो हमारे जैसा एवरेज बच्चा है, जो मेजॉरिटी है क्लास की, वो कहाँ जाएगी? वो 2 बजे के बाद घर जाएगी, 1 घंटा खाना खाएगी और उसके बाद एकेडमीज और ट्यूटर्स के पास जाएगी, और फिर रात को वहां से फारिग होकर घर जाएगी, खाना खाएगी और सो जाएगी, अगले दिन सेम वही चक्की. आई वाज दैट वाज मी इन माय ओ लेवल्स. ए लेवल्स में चलो ठीक है, अच्छा था, मतलब थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, आपको इतनी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. ए लेवल ज़्यादा मुश्किल भी होता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज है वो लेवल से, बट आपको पता होता है कि इसके बाद यूनिवर्सिटी जाना है तो मतलब अब करना ही पड़ेगा. हाँ, एंड ऑल्सो थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है. ओ लेवल में वही कि मतलब 8 बजे स्कूल जाना है, 2 बजे से पहले स्कूल नहीं निकल सकते. ए लेवल में आगे थोड़ा आपको मिल जाता है कि यार ठीक है यार, बड़े हो गए हैं, यूनिफॉर्म चेंज हो गए. बीकन हाउस में यूनिफॉर्म से, बाकी जगहों पे एलजीएस में तो थे भी नहीं, आई डोंट नो, बट वही बड़े हो गए यार, निकल सकते हैं, दोस्त बन रहे हैं, ये सब तो थोड़ा चिल हो जाता है. और आपको पता होता है एक दफ़ा आप सीआईज वाली चीज़ से गुजर चुके होते हो, तो आपको पता है कि ए लेवल में सीआईज अगर नहीं दिए तो फिर आपके मतलब होंगे ही, तो मतलब आप खुद पढ़ लेते हो. बट ओ लेवल में जब आप बड़े हो रहे हो, आपको बहुत चाहिए होता है कि आप सही से आप पे कोई फोकस करे. नहीं, आई वाज आपकी मैं सारी जर्नी देख रही थी, and the person that stood out to me at the age of 17, you started your own first startup. वो कैसा experience था? Let's talk about it. It was amazing because I was very young when I tasted the taste of financial independence. And I feel like अब तो काफी ज्यादा हो चुका है, सबको होता है कि हम सबको होता है अपनी कोई ना कोई हम करें चीज, बट उस टाइम पे जब मैं थी तब मतलब very early. हाँ, मेरे आसपास मेरे मतलब
लड़कियां दोस्त तो भी नहीं थी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो and I got it from my dad and I've seen my dad used to work 2 jobs. He was in the Air Force and he also had his own business. He was a pilot and a business owner. I've seen him मतलब सुबह 9 बजे 8 बजे हमारे साथ जा रहे हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, पहले ऑफिस वाला काम पायलट वाला सारा कर रहे हैं, then उसके बाद उनका अपना business है. So I've seen him do these things side by side and also because I know कि मतलब he loved flying but he also loved being an entrepreneur. So I got that from him कि अच्छा मुझे I don't want to work for someone 9 to 5. मतलब he was a pilot, he was working for the government but he was doing it because he loved flying. Also he was doing something he loved. I think it instilled in you a hustler mindset, I guess. And from a very early age you were like hustle. तो कुछ नहीं होता, ठीक है सब करते हैं. That was my mindset कि अच्छा मेरे बाबा करे सब करते हैं. हाँ, तो you were like, it gave you the first push, कुछ नहीं होता, it's not a big deal, I should go out and do something. अच्छा, what were the first hiccups जो तुम्हें लगे? I was like, अच्छा मैं 17 साल की उम्र में अपना business कर रही हूँ, I'm financially independent. क्या मसले लग रहे थे? You wanted it to be better. सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं जिस मार्केट में थी, एक तो चलो मैं छोटी भी थी बट जो हमारा छोटा है वो बाहर के हिसाब से छोटा नहीं है. चलो अगर मैंने 16 साल की उम्र में अपना या 15 साल की उम्र में अपना स्टार्ट किया है तो मैं मार्केट में जाके अपना कैश ऑन डिलीवरी वाला अकाउंट नहीं खुलवा सकती. आई हैड टू डिपेंड ऑन माई फादर टू गो आउट टू लेपर्ड कोरियर या जोन सा भी मेरा कोरियर था, डू दैट फॉर मी. आई डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट. I needed my father's bank account. तो वही थे जो उनको अपने schedule में से, which is already very packed, he had to go out of his way, go to a courier वाला मतलब office, वहाँ पे account खुलवाएंगे अपने नाम पे अपने अकाउंट के ऊपर. और यही आई थिंक मसले होते हैं जो अभी हम स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं पाकिस्तानी बच्चों को. ये 4-5 मसले होते हैं, छोड़ो यार क्या मसला है, मैं नहीं करना, छोड़ो. और फिर अकाउंट भी नहीं होता, फिर इतना मसला होता है कि मतलब मेरा प्रॉब्लम यही था कि मतलब आई हैड टू डिपेंड ऑन माय डैड बट माय डैड वाज वेरी सपोर्टिव सो आई डिड नॉट माइंड. I was very okay with that. But imagine if there's a father who doesn't support the idea of her daughter starting. It's literally full stop. कुछ भी नहीं खत्म. मतलब वो छुपके भी नहीं, मतलब I'm not saying कि छुपके करना चाहिए. I'm not minding that. But अगर करना पड़ जाए, ठीक है, मतलब सबने हम लोगों ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो छुपके किया ही होता है. इतने दूध के धुले तो कोई भी नहीं है. Exactly. लेकिन तो मतलब अगर कोई अच्छी चीज आप छुपके करना भी चाहो तो वो आप नहीं कर सकते. मैंने शुरू से देखा है अमेरिकन मूवीज में when like teenagers are like 16-17 they move out, they get their own apartments, they become financially independent. Like in Pakistan it's still a new concept, it's like it's frowned upon so मजे के लिए. मतलब 18 साल की उम्र में वो बच्चे वहाँ पे कहना शुरू हो जाते हैं हम तो जा रहे हैं. हमारे 18 साल की उम्र में भाई रात को 10 बजे तक बाहर नहीं रुकने देते हमें. चुप करके बैठो घर में. नहीं, मेरी मामा का थोड़ा सा अभी तक ये है कि आई हैव डन माय बैचलर्स अब्रॉड, आई हैव डन माय मास्टर्स अब्रॉड, आई लिव अब्रॉड. बट जब मैं पाकिस्तान में आती हूँ मम्मा मुझे इस्लामाबाद नहीं जाने देगी. मतलब मैं पूरे मुल्क घूमा ही हूँ, इस्लामाबाद तक मुझे इजाजत नहीं मिलेगी कि नहीं जाना. बट आई गेट इट कि ठीक है मुल्क इतना सिक्योर नहीं है बट बाहर भेज दोगे लेकिन इस्लामाबाद नहीं भेजोगे. मतलब वो है बट माइंडसेट बहुत डिफरेंट है. अच्छा चलो लेट्स टॉक अबाउट ओ लेवल्स कर लिया, ए लेवल्स कर लिया, नाउ यू वर थिंकिंग चलो मैंने बैचलर्स करना है, ठीक है. बैचलर्स एट सच अ यंग एज बाहर से करना, इट टेक्स गट्स, डजंट इट? हाँ, लेकिन गट से ज्यादा इजाजत. इजाजत. So you went on to Malaysia, you and did your bachelor's there. तो कैसे भाई घर वालों को कैसे कन्विंस किया तुमने? यार अच्छा मेरा सीन ये था कि मेरी बहन ऑलरेडी यूएस में थी बट मैं जब ये बताती हूँ तो अगले को लगता है हाँ स्टोरी एंड बहन गई हुई थी तो ये भी चलेगी. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मेरी बहन मास्टर्स के लिए गई थी, मैं बैचलर में जो बच्ची थी अभी, ठीक है. और तो मुझे पता है कि मैंने कितने मतलब पापर्स बेल्स के मैं गई हूँ, ठीक है, जाने दें प्लीज. लेकिन सीन ये है कि मतलब ए लेवल में मुझे थोड़ा मतलब जिस तरह मेरे सब्जेक्ट्स के लिए चूज करने के लिए इतनी लिबर्टी नहीं मिली थी क्योंकि अगेन मैं भी पाकिस्तानी खानदान से आती हूँ. मेरे बाबा भी बोला था साइंसेस बेटा पढ़ोगे आप पहले. तो मतलब मैंने कोशिश की रिबेल करने की कि मैं बिजनेस की तरफ चली जाऊं बट at the end of the day I am a Pakistani daughter and I had to agree with my dad. So I said that. तो उस टाइम पे मेरे बाबा ने बोला था नहीं तुम्हें इतना नहीं पता, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप कर जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं बताऊंगा. मैं बताऊंगा. बट दैट इज नहीं, ऐसे नहीं बोला था उन्होंने. बट चलो जो भी है मैं at the end of the day I listened to him and I did sciences. But bachelors के टाइम पे I was already earning. एक तो मेरा अपना स्टार्टअप था तो उनको पता था कि अच्छा
बच्ची है लेकिन पागल नहीं है, हाँ, ठीक है, तो कुछ मतलब समझ है, कुछ कुछ समझ अकल है, है। हाँ ठीक है, तो मैंने उनको ये बोला कि मतलब मैंने ये किया है तो मतलब मैं कर लूंगी, मैं पढ़ लूंगी, मुझे वैसे ही बिजनेस पढ़ना है, आप मैं करना चाहती हूँ, मतलब यही कर के मतलब पेरेंट्स को यही चाहिए होता है, थोड़ी रीअश्योरेंस दो, आप थोड़ा सा करो। आई एग्री, हर माँ बाप डिफरेंट होते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलता, बट मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव थे, स्पेशली व्हेन इट केम्स टू एजुकेशन, हमेशा से। तो मतलब वो मैं थोड़ा कन्विंस कर लिया कि यार जाने दें प्लीज, ये है वो है, तो मतलब मान गए यार। हम ये भी बात कर रहे थे कि एक तो पाकिस्तानी बच्चों को इतना बड़ा हर्डल होता है व्हेन दे गो आउट गेट कंसल्टेंसीज, एंड व्हाट इट डज इज लाइक वो एक और बैरियर बना देता है आपका। एक तो फी बहुत बड़ा मसला होता है, देन ट्राई टू ईट यू अप। यू डिड अ स्मार्ट थिंग, यू जस्ट वेंट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, you followed that, खुद ही प्रोसीजर किया और done, you were out, you were in Malaysia. हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ना उस टाइम तक से आई हैड मार्केटेड माय ओन स्टार्टअप, तो आई न्यू हाउ मार्केटिंग वर्क्स। अगर कोई बिजनेस आपको कोई चीज भेज रहा है, आपको उसको सुनने की जरूरत नहीं है, वो मार्केटिंग है भाई। It's like if तो it's definitely मतलब उनका टेक्स्ट आया मुझे कि हम XYZ कंसल्टेंसी है, ये यूनिवर्सिटी है, इसकी इनटेक खुल रही है, इसकी फी इतनी है। तो मैं अगर मैं मतलब एक नॉर्मल बंदा यही करेगा कि वो कंसल्टेंट के पास जाएगा, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा मतलब ये हम सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, हम लोग को बहुत अच्छी एजुकेशन मिली हुई है, हम सबको यही चाहिए कि सोर्स पे जाओ ना, जो चीज बिक रही है उसके ऊपर जाओ, जो बेच रहा है उसके पास क्यों जा रहे हो, मतलब जाकर देखो तो सही कि खुद ले सकते हो कि नहीं। तो मतलब आई इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कंसल्टेंसी आई वेंट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और तुमने वहां से प्रोसीजर किया, यू खुद ही किया सारा कुछ, यू वर डन विद Malaysia. अच्छा, you did your bachelors in Malaysia. You started out थोड़ा सा bubble से बाहर निकली, but still it was early ages Malaysia. You came back for COVID, like COVID के लिए आई तुम, ठीक है, और तुमने कहा था फिर अब मैंने मास्टर्स करना है, और वो सारा प्रोसेस बताओ। अच्छा, बेसिकली मैं 2020 में गई थी, और नहीं 2017 में गई थी, और 2020 में मेरा बैचलर्स खत्म हो गया था, तो मैं बैचलर्स करके मतलब मैं पहले ही पाकिस्तान में थी, आई हैड टू गो बैक एंड देन आई केम बैक अगेन, अपने फाइनल सारी प्रेजेंटेशंस वगैरह देख के FIP की वो करके मैं वापस आई हूँ। और कोविड का सीन है, तो जॉब मार्केट का तो कोई सीन ही नहीं है, खत्म, तो कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है। और वहाँ पे भी नहीं मैं रहना चाह रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर है, फिर कोविड का टाइम है, वहाँ पे रिसोर्सेज भी नहीं, तो रिसोर्सेज है बट इन द सेंस कि मतलब घर वाली बात नहीं है, ठीक है, तो इतना वो नहीं है। तो फिर मैं वापस आई हूँ, व्हाट आई डिड वाज I joined a digital marketing agency remotely, but that was for something that I had side पे stable चल रहा है, ठीक है, but side पे मुझे था कि यार उससे पहले मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर चुकी हुई थी, अपनी स्किन केयर वाला, which was a success। तो जो दूसरा स्टार्टअप है, हाँ, जो दूसरा स्टार्टअप था, ठीक है, जो स्किन केयर हेल्थ एंड ब्यूटी, and I think it was a really big success, जैसे तुमने very big success, क्योंकि मतलब I remember it was the launch night, I started from my house, and my initial investment was just 30,000। ठीक है, और ये 2020 की बात है, तो अब obviously इन्फ्लेशन और सबके बाद वो 30,000 नहीं है, बट उस टाइम पे 30,000 के साथ that was my initial investment। चलो सब कुछ मिला मिलू के आप 40 कर लो, that was the total, ठीक है, it was under 50 for sure। And I remember मेरी first night when I went live, I did not even have a website at the time। I was just taking orders through DMs and Google Sheets and Google Forms, क्योंकि मुझे वेबसाइट बनानी तब नहीं आती थी, and I was just I am the kind of person कि मतलब अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं करना शुरू कर दूंगी, अच्छा उसको इसके लिए उठा लेती हूँ, इसको उसके लिए हायर कर लेती हूँ, इसको उसके लिए, कि मतलब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और प्रॉफिट बनाने से पहले मैं कॉस्ट, अच्छा ये भी कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, ये भाई क्यों यार, खुद सीख कर लो, ट्राई टू बी सेल्फ सफिशिएंट, खुद कर लो। तो फिर मैं मतलब मेरा यही था, मैंने फॉर्म से ऑर्डर्स लिए, आई वाज द वन रिप्लाइंग टू DMs, आई वाज द वन टेकिंग द ऑर्डर्स, आई वाज द वन पैकिंग द ऑर्डर्स, आई वाज द वन डूइंग एवरीथिंग, आई वाज आल्सो मार्केटिंग इट, सो आई वाज वन मैन शो, यू आर द होल कंपनी। एंड मतलब obviously जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर थी, I had a good connection with a friend that I found in A-levels, outsourced it basically, the production yes, but the formulation was my own। अच्छा यार, देखो तुम बाहर से बैचलर्स करके did your bachelors from Malaysia, right? You were such an entrepreneurial person, what made you think like अच्छा मैंने मास्टर्स भी करना? यार I think my dad and my mom, because both my parents wanted us to do मास्टर्स। अच्छा, सही, मतलब सारे बच्चों को मास्टर्स करना ही करना है, मतलब एक बेसिक एजुकेशन है, ये चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मेरे माइंड में था कि यार करना ही है। और दूसरा मुझे
पाकिस्तान में रहना भी नहीं था तो मुझे पता था ओनली वे आउट इज मास्टर्स और उसके बाद मैं फिर बाहर ही जाऊंगी अच्छा चलो तुम कोविड आ गई यू गॉट योर ओन स्टार्टअप यू वर सक्सेसफुल फिर व्हाट वर द प्रोसेस तुम यू वेंट टू डू योर मास्टर्स फ्रॉम फ्रांस राइट हाँ बेसिकली मेरा जब स्टार्टअप चल ही रहा था मेरी जॉब भी चल रही थी बस 4-5 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि आई कुड क्लियरली सी देयर लाइक अंडर पेइंग मी और फिर मैंने मतलब नो हेट ऑन द कंपनी आई स्टिल लव द कंपनी दे स्टिल फॉलो मी आई लव यू गाइज बट I could tell that I'm being underpaid and जो भी है तो मतलब undervalued हाँ नहीं I was very valued but obviously company उसमें मतलब obviously वही सबके अपने अपने होते हैं वो सबको तो नहीं but I was very valued I still love you guys if you guys are watching this but anyway तो उसके बाद फिर मेरा यही मैंने अभी मैं ये सब कर रही थी मैंने अपवर्क पे फ्रीलांसिंग भी शुरू कर दी बट साइड बाय साइड मुझे दिमाग में मुझे कीड़ा होता है ना पीछे के नहीं यहाँ नहीं बैठना भाई बाहर जाना है तो मैंने साथ अपनी एप्लीकेशन शुरू कर दी स्कॉलरशिप्स की और मेरा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था EIT डिजिटल which is a very good program I think I have talked about it on my platform but it's still not very recognized तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था that is और मैं साथ उस पर अप्लाई करना शुरू होगी but one thing I would tell everyone who's listening this is कि यार सबको लगता है कि GPA नहीं है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी that is not the case I had 2.90 GPA and I still got 100% scholarship मुझे कोई शर्म नहीं है मैं 2.9 GPA वाली बंदी हूँ ठीक है क्योंकि स्कॉलरशिप को लेके मैं बाहर तो गई नहीं हूँ तो ये जो 3.6 3.7 वाले बच्चे हैं ठीक है वो अच्छे हैं लेकिन हम 2.9 no shade on them हम 2.9 वाली भी लेके निकल जाते हैं बाहर ठीक है बट एनीवे तो मैंने वो एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी और बस मिल गई स्कॉलरशिप चली गई अच्छा सो यू वेंट टू फ्रांस चली गई मास्टर्स के लिए एंड then you were like acha theek hai I'm gonna start doing some influencer thing on this scholarship because I think you went through the whole process of getting those scholarships khudi and you wanted what were your prospect behind chalo say I'll talk about scholarships on my I already had that influencer profile that is how I got into marketing I started my influencer profile in 2017 during my bachelors but that was just for fun के मतलब fun भी और क्योंकि मैं जब मलेशिया में थी I was collaborating with brands जो कि मतलब वीडियो के लिए they would pay me and everything but that was like side hustle just a mini hustle so I started the influencer profile then but उसके बाद जब मैं फ्रांस गई थी तो मैंने 2 साल अपने उसके ऊपर प्रोफाइल पे काम नहीं किया था because I was focusing on my masters and I was freelancing also full time to fund myself and survive so I did not have the time to work on my influencer profile but after I think last year मेरे first year के end second year के end के towards I started being active again. I started from posting because my initial niche was beauty and fashion. So I started again on my profile with fashion related stuff. But then I also started sharing stuff about freelancing. And then I was like, okay, I've seen a lot of response on freelancing tips wali cheez. So I'm 100% sure they're going to love the content that I put out for scholarships. So I mean, it was a very funny time because I was juggling between कि अच्छा इस नीच में जाऊँ तो मतलब long story short कि मतलब मैंने fashion से freelancing tips पे गई freelancing tips से मैं scholarship पे गई और अब बस इसी में घूम रही हूँ because एक चीज़ है कि मतलब I could relate मतलब I had my sisters who helped me with all this stuff but there are a lot of people who don't have siblings who they can count on for this kind of stuff नहीं definitely अच्छा तो let's talk about वो initial phases of you switched to the scholarship वाली influencing तो how did you come about to be like how did people receive you or what was the first thing that went viral for you like you were like अच्छा ठीक है अब ये करूँगी the first video that went उस time पे there were multiple videos that were going viral so it was really hard for me to identify acha this is working but then sooner or later I started to realize कि यार ठीक है एक वीडियो थी जिसमें मैं I talked about 5 different scholarships for Pakistani students abroad that went viral I think it has around 4 million views on Instagram
And बाकी मैं उसी के I started editing videos along the same lines. They also had like 1 million views, 2 million views. मैं कह रही हूँ यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब मैं 2017 से शुरू हुई हूँ, मुझे था ये एकदम से मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन कहाँ जा रही है. I think you were just lucky you found that gap in the market because Pakistani community में इतनी awareness नहीं है about this area. So I think you're doing a really good job first of all awareness के ऊपर. अच्छा चलें, let's talk about your social media agency. How did you like start it? Like it's a Gen Z run company, right? It's basically young people ही चला रहे हैं, youth ही कर रही है. How did you start it? अच्छा, so basically I came up with the idea in 2021 before my masters, but then I went for my masters, so I did not have the time to do it. But then अभी recently after I graduated, मुझे था कि अच्छा I don't want to work. One thing मुझे एक चीज़ बचपन से पता है कि मैं किसी के लिए 9 to 5 तो काम नहीं कर रही भाई. जो करना है खुद ही करना है. ठीक है, मतलब हाँ, नहीं या तो अपना बिजनेस चलाओ या फ्रीलांस. ठीक है, फ्रीलांसिंग में भी आप किसी के लिए काम करो, but that's not 9 to 5. तो मुझे पता था कि मैं मर जाऊंगी, मैं 9 to 5 तो नहीं करूंगी भाई. और पाकिस्तान की मार्केट में 9 to 5 का कोई सीन ही नहीं. ठीक है, मतलब है, but like personally मैं जहाँ चाहती हूँ I can't do it. अपना अपना होता है. No shade on people who do it. I have a lot of people who did it. My father did it, but like no shade on them. But I can't do it. I'm not that person. Not that person. हाँ, तो basically यही हुआ कि मतलब ठीक है, I should work on my agency. I should scale it up. अभी तक I was working as a sole contractor. I was working with a handful of clients, but now I need to scale up. I need to outsource the talent and the projects to people, and then keep on sourcing more clients. So that was the idea, and I co-founded it with I was the founder, but my brother and my cousin, they're the co-founders of the company. Achha. So they're like handling operations and finances, and I'm managing more like the sourcing stuff, like the client sourcing and like talent sourcing and everything. I love to talk to you on like how you scaled up and how do you actually get all those international clients. So it depends. Like उससे पहले I was entirely depending on Upwork and word of mouth, because I've been working with I've worked with around 30-40 plus international clients as a sole contractor, so I have good contacts. So the first thing I did was I reached out to them. I told them that I've started this agency. So if you know someone who would because they could vouch for my services, right? Me as a person. Okay. So I told them, if you know someone or if you want to get the marketing services again, so feel free to reach out. So that was word of mouth. Then Upwork, obviously I have a agency set up on Upwork also, but I do not heavily rely on it because Upwork agency ka koi scene hai ki matlab they charge you a higher percentage or something like that. So I'm not, that is not something I would entirely rely on. So word of mouth, and then LinkedIn, so you can find really good prospect clients. Yeah, definitely. If you engage with them and everything. But that is like marketing side. Achha, so basically you combined all those components and you were like, okay, I'll go out, get some clients and start working on it. Yeah. Achha, let's talk about how was your response on like your influencer videos, like Pakistani awam kaisa response de rahi thi? Kis cheez pe? The scholarships, about the scholarship content you were putting out. What was the response? अच्छा, काफी मिक्स था, ठीक है, बट ज्यादातर मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि क्या सीन था. सबसे ज्यादा मसला ये है हमारी पाकिस्तानी आवाम का कि मतलब इफ यू गो ऑन माय प्रोफाइल एंड यू वॉच माय वीडियोस, you would know कि उसमें A to Z स्कॉलरशिप का नाम लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स, क्या करोगे तो घुस जाओगे, क्या नहीं करोगे तो नहीं घुसोगे. फिर भी लोग नीचे कमेंट करें लिंक नहीं खुल रहा, प्लीज ये कैसे अप्लाई कैसे करते हैं, ये इसका बता दें, एप्लीकेशन फिल कर दें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख दें प्लीज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि मतलब इतनी चीजें, मतलब ये वही है कि मैंने भी जो 5 मिनट पहले तुम लोग को बाहर बोला कि हमारी वहां में है कि प्लेट दोगे, बिरयानी डाल के दोगे, ऊपर दही भी डालोगे ना, मिक्स भी करके दोगे, फिर चमची भी बना के मुंह के पास दे दोगे, कहेंगे यार निकलवा दो, निकला नहीं जा रहा कि मतलब कुछ सब कुछ भी करके दे दोगे ना, एंड पे आपसे ही कहेंगे कि नहीं करके दो. और जब आपसे मदद मांगते हैं तो आप मदद तो करती नहीं. भाई तो क्या कर रही हूँ, मदद नहीं करी तो और क्या कर रही हूँ. यही मैं सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन फीचर है इंस्टाग्राम का, पाकिस्तान में सबके पास नहीं है. अगर मैंने यही वीडियो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे डालना शुरू कर दी ना, जब इनको पे कर करके वीडियोस को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर ये कहेंगे यार नहीं प्लीज वो फ्री कंटेंट ही दे दे. Yeah, on this basis, how do you deal with the trolls? Like
how do you get around it? Like, yeah, I've been in this space for almost 4-5 years now. So मैं काफी ढीठ हो चुकी हूँ. You're an OG. मैं काफी ढीठ हो चुकी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता. But okay, obviously कभी-कभी फर्क पड़ता है. But I have a very good support strong support system. And I'm not talking about at home. I'm talking about in the influencer space. So I have really good friends who we all started at the same time and we all relate to them. But yeah, so हम लोग आपस में we talk each other out of it. Yeah, easy सीन है ना पढ़ो. मैं फिर भी पढ़ती हूँ क्योंकि वेली बहुत हूँ, नहीं वेली नहीं हूँ, बट पढ़ लेती हूँ. तो इग्नोर ही करना होता है, बस यही सीन है. Yeah, I think Pakistani moms, since it's very pampered, they live in a bubble. I think going out abroad also changes a lot of your perspective in this regard, and you kind of become thoda sa na independent. Was that the same case with you? Did you become like independent? जब बाहर गई, you were like, yeah, I think that goes without saying. अब हम लोग यहाँ से जाते हैं जी, बाथरूम धुल रहे हैं, खाने प्लेट में आ रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं सुबह जी. अब आई नो सब घरों में ये नहीं होता, कुछ घरों में थोड़ा मतलब मेरे घर का यही था कि यार 2-3 बजे आराम से उठो, सब कुछ है, मतलब ठीक है, प्रिविलेज्ड एंड वेरी पैम्पर्ड. तो लेकिन आई फील लाइक काफी लोगों का यही सीन होता है यार यहाँ पे. ठीक है, तो मतलब जब आप बाहर जाते हो तो थोड़ा आपको 360 डिफरेंस तो मिलता है, 360 डिग्री का. कि मतलब ठीक है, खाना खुद बन रहा है, सफाई खुद हो रही है, साथ काम भी करे और पैसे कमा के खाना, अपनी ग्रोसरी भी खुद कमानी है, लानी है. मतलब यू हैव टू अर्न योर ग्रोसरी. जो पहले घर पे ठीक है आ रही है, खाना नहीं खाना प्लेट में पड़ा हुआ जाया कर दो, कोई मसला नहीं. लेकिन अब वहां पर जब अगर प्लेट में कोई खाना छूटा है ना, उठ के फ्रिज में रखते हैं कि यार नहीं ये बाद में खाएंगे, रात को भूख लगेगी, खाना दोबारा नहीं बनाना. मतलब इस तरह यहाँ पे वो चीजें नहीं है. मैं यहाँ पे खैर मैं बोल दिया, आई थिंक आई हैव सेड इनफ अबाउट दैट, बट यस डेफिनेटली. अच्छा, तो building on that, what's your like future prospects about influencer? Where are you heading toward, like in the scholarship space? Yeah, in this space I'm actually working on some digital products currently. Jisme I'm like providing value on how to work on your SOP and also some digital products for digital documents, basically to teach people how to freelance, how to learn digital marketing, because I'm self-taught. I did everything myself. So basically what I'm doing, I'm creating documents, digital products that I'm going to sell online for people to access, how they can get scholarships, how they can write a good SOP, and then how they can earn while they're abroad. Yeah. So you're basically like teaching your qualities to other people. Like, how I survive, basically that. So you have a social media marketing agency. What things that you provide for your clientele, like to make them a global brand in terms of success and all that? So basically, the clients that actually I connect with are already global, like they exist globally. Yeah. But what they're usually looking for is expansion, and then I help them with that expansion. But there are some things that I do look in companies if I want to work with them, usually because I've worked with people के मतलब मैं पहले directly काम करती थी. So what I believe in is कि अगर आपने किसी के साथ काम करना है तो आपको पहले बंदे को देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का है. अगर तो मतलब I worked with clients जो कि ऐसे होते हैं कि मतलब कमिटमेंट कुछ हुई है कि मतलब इस हफ्ते में ये काम डिलीवर होगा, but then sometimes they know कि अच्छा आप उनको पता है आप कहाँ से आ रहे हो, मतलब like they know I'm from Pakistan. And they're from the States, so I'm not saying everybody's like that, but they know कि ये market like you can मतलब कम पैसों में काम हो जाता है. तो मतलब what they try to do is like commitment एक हुई है, but then वो ज़्यादा चीज़ें निकलवाने की उससे करेंगे. तो लोगों, you have to connect with the right people. You cannot like just because there's a company that wants to work with you, great, amazing. Even if it's the first company that reaches out, but you still have to work with the right people, because if you get stuck with shitty people, then there's no way back, because फिर reviews आते हैं, आपके पास कुछ बनता ही नहीं है कि आपकी कोई worth रह सके. On that, like what tools do you actually like use to expand the businesses? For the business. So basically I offer like the company offers a variety of different services which
मैं बोलूँगी वेबसाइट पे लिखे हैं, बट अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को उनकी सोशल मीडिया के लिए मतलब उनकी कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट जनरेशन और सब के लिए हेल्प करी हूँ, सो आई हेविली रिलाई ऑन नोशन. आई रियली लाइक नोशन as a software. And then for video reviews and everything, frame.io is a very good tool. For video editing, CapCut free version is also amazing, especially क्योंकि SFC as in short form content वाला scene चल रहा है. And Canva, everybody loves Canva. Everybody loves Canva. Nobody can live without Canva at this point, I feel like. And for websites, I like WordPress. And the list goes on. I can keep going on. I think Photoshop is like a बहुत ज़्यादा काम होता है because Canva is just taken in the market. It's just so easy to use. The fun fact, I don't know Photoshop. I never learned Photoshop. I never bothered learning it. But अगर आपको आती है, amazing. That is a very good tool to know. Yeah. But I never felt the need of learning it. You were like Canva all the way. हाँ, ठीक है भाई. What do you recommend कि Pakistani youth, where do they find good scholarship? यार एक तो सबसे अच्छा पोर्टल मैं बताती हूँ जो दुनिया में सबको एक्सेसिबल है, गूगल. सबसे पहले वहाँ पे जाके लिखो, वहाँ पे आ जाती हैं. बट अगर आपको स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल चाहिए, सो देयर आर 3 पोर्टल्स दैट आई रियली लाइक. ascholarship.com, scholarshipportal.com, and then there's scholarshiproar.com. इसके ऊपर जाओगे तो you will find scholarships worldwide. और वो इंटरनेशनल्स के लिए होती हैं, कुछ नहीं होती, वो एलिजिबिलिटी में लिखा होता है. बट एक चीज़ आई वुड से, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स या पोर्टल्स जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी, अपनी प्रोफाइल पे काम करो. यू शुड वर्क ऑन योर SOP, यू शुड वर्क ऑन गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, या कुछ तो करो. मतलब आप ऐसे ही सिर्फ स्कॉलरशिप पे जाओगे, अप्लाई कर दोगे, आपको नहीं मिलेगी. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी SOP है. GPA भी उतना मैटर नहीं करता जितनी आपकी SOP मैटर करती है. अच्छा Sanya, thank you so much for coming and giving us your time. It was lovely having you on board. You're welcome.